हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे विद रिगार्ड टू व्हाट आर एनेंटियोमर्स, डायस्टेरियोमर्स एंड मेसो कंपाउंड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे एनेंटियोमर्स के हवाले से। एनेंटियोमर्स में आपको तीन कंडीशंस याद रखने हैं। पहली कंडीशन है दैट आइसोमर्स मस्ट बी ऑप्टिकल आइसोमर्स, व्हिच मींस दे मस्ट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट. That is possible only when the molecule is optically active or chiral. Second condition is that जो ये isomers है they must be mirror images of each other. And third condition is those mirror images should be non-superimposable. For example, हमारे पास ये molecule है, इसमें chiral center एक मौजूद है जिसमें attach है chlorine, carboxylic acid group, methyl group and hydrogen. If you see its descriptor, chlorine gets the top priority, then there is carboxylic acid group, the second priority, and third priority will be for methyl group. Least priority group here is hydrogen. So once you move, it moves anti-clockwise. So the stereo descriptor or the configuration of this molecule is S. अगर हम इसकी मिरर इमेज देखेंगे तो मिरर इमेज इसका जो बन गया है दैट इज द R isomer. These two isomers are optical isomers because they contain chiral center and these are the mirror images of each other. And अगर आप मिरर इमेज वाला मॉलिक्यूल जो है वो उठा के S वाले आइसोमर पे लगाएंगे तो क्लोरीन will lie on methyl, methyl will lie on chlorine. So they will not superimpose. So they are non-superimposable mirror images. So we call these isomers as enantiomers. अब आप कैसे पहचानेंगे isomers enantiomers है? एक इजी ट्रिक से, वो ये कि आपको सिंपली स्टीरियो डिस्क्रिप्टर देखना है, मतलब मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन देखनी है. अगर मॉलिक्यूल्स की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगी या अगर मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, सपोज पहले मॉलिक्यूल में कॉन्फ़िगरेशन S है, दूसरे इसका मिरर इमेज जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन R है, सो कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस एट द chiral center, these molecules will surely be enantiomers. अब जितने भी chiral centers होंगे किसी मॉलिक्यूल में, जब आप उसका मिरर इमेज देखेंगे, अगर हर एक chiral center पे स्टीरियो डिस्क्रिप्टर मतलब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी, so they will become enantiomers. So we can write molecules which involve change of configuration at all chiral centers are said to be enantiomers. ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो यहां पे निकल करके आती है. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, इट्स अ फिशर प्रोजेक्शन ऑफ दैट मॉलिक्यूल कंटेनिंग क्लोरीन, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, फ्लोरीन एंड मिथाइल. अगर आप देखेंगे क्लोरीन गेट इज द टॉप प्रायोरिटी, देन फ्लोरीन, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, इट मूव्स क्लॉकवाइज and the least priority group is placed vertically, so it's R. इसका मिरर इमेज जो है उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज S. सो कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, एक में R है और मिरर इमेज में S है, सो दे आर बेसिकली एनेंटियोमर्स. अगर आप सेकंड मॉलिक्यूल देखेंगे, क्लोरीन गेट इज द टॉप प्रायोरिटी, देन chlorine get is the top priority, then ethyl, then methyl. It moves anti-clockwise. Should have been S, but since hydrogen is placed horizontally, so it gets the configure R. अगर आपको confusion हो रहा है R and S nomenclature में, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं. The link has been placed in the description. इसका mirror image जो है उसकी configuration S है. Obviously, upon mirror image, configuration changes at the chiral center, so they are basically enantiomers. Now what are diastereomers? Diastereomers में दो conditions important है. एक condition ये है कि isomers must be stereoisomers, they can be or they cannot be optical isomers, and geometrical isomers जो भी हैं they are all diastereomers. Next condition is they are not mirror images of each other, वो एक दूसरे के mirror image नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये दो मॉलिक्यूल्स है, वन इज सिस एंड द अनदर इज ट्रांस. These two molecules are not mirror images of each other, so they are diastereomers.
Now we have another category that's called as a meso compound. Meso compounds में तीन conditions आपको याद रखने हैं. पहली condition ये है कि molecules must contain more than one chiral centers. Next is there must be the presence of plane of symmetry such that one half will be the mirror image of another half. And third condition is the molecules are optically inactive, and this optical inactivity arises due to internal compensation. What is this internal compensation? We'll be talking about this from short while. For example, हमारे पास ये तीन molecules है. First molecule or second molecule, they are the mirror images of each other. The stereo descriptor at the two chiral centers, this is the example of tartaric acid. The stereo descriptor at the two chiral centers in the first molecule is R, while as in its mirror image it's S. So configuration at each chiral center changes. So these two are basically enantiomers. So first and second are enantiomers. We have the third molecule in which there is a plane of symmetry. This plane of symmetry makes the molecule optically inactive. अगर आप देखेंगे जो अपर वाला हाफ है मॉलिक्यूल का, उस कायरल सेंटर की डिस्क्रिप्टर R है और नीचे वाले कायरल सेंटर की स्टीरियो डिस्क्रिप्टर जो है वो S है. इसका मतलब ये हुआ अपर वाला हाफ अगर रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द राइट, द लोअर हाफ will rotate to the left. Net result is it will not rotate PPL at all, so it will be optically active. This is called as internal compensation. I hope you understand it. So we can write molecules first and second are enantiomers because configuration at each chiral center changes. First and third, second and third are diastereomers because they are not mirror images of each other at all. Third compound is a meso compound. Why? Because it contains more than two chiral centers, more than one chiral center, and it has a plane of symmetry. And because of this plane of symmetry, it's optically inactive. So all the three conditions satisfy. So we call it a meso compound. Now, enantiomers के physical properties और chemical properties same हुआ करते हैं, लेकिन उनकी जो rates of reactions होती हैं, they can be different, and they rotate PPL in opposite directions. While as talking about diastereomers, उनके physical properties भी और chemical properties भी different हुआ करते हैं. Now, अगर आपके पास एक D isomer होगा and L isomer होगा, you take the mixture of D and L in equal amounts. We call it a racemic mixture. अगर आप इन D और L को डेक्स्ट्रो और लियो आइसोमर को इस मिक्सचर में सेपरेट करना चाहेंगे, we call that resolution. This was all about meso compounds, diastereomers and enantiomers. I hope you understand it. If you like my videos, please do not hesitate to subscribe my channel. Thanks for watching. B.Sc.